Hello, students, welcome back. I hope that you all have enjoyed a lot in winter vacations and you are fit and fine at your home. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 16, that is water. In this chapter, we learn about the forms of water, sources of water, depletion of water table, distribution of water, and effects of scarcity of water on livings and conservation of water. First of all, we discuss what is the importance of water in our life. We all know that what is very important for our life. We can't exist without water as we use water for drinking, bathing, sanitation, washing, cooking, etc. Today, modern agriculture, industries, transportation, power generation, civic facilities cannot exist without water. As we need water, plants also require water to grow and make their food in the presence of light. So, water also helps the plant to take nutrients from the soil to all other parts. Human body also need water for digestion, internal cleaning, oxygen circulation and ultimately for the functioning of each and every cell. Aquatic life and vegetation cannot exist without water. So, there would be no life on earth without water. That's why we can say that a slogan that is जल है तो कल है. मतलब हम पानी के बिना रह ही नहीं सकते. जितना धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. इसीलिए एक स्लोगन बन गया है जल है तो कल है. अगर पानी नहीं है तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो वी कांट सर्वाइव. सो द March 22nd is celebrated as World Water Day throughout the world. So that's why we can say that water is very important for our life. Now, what are the forms of water? It is only substance that exists in all the three states. At the three states like solids, liquid and gaseous form. Solid में gas like ice or snow, लाइक जैसे ग्लेशियर्स पे आइस रहती है या हम किसी माउंटेन एरियाज पे चाहिए हाई हिल्स पे वहाँ पे स्नो की फॉर्म में दैट इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट. लिक्विड दैट वो जो जर्नल लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं. एंड गैसियस फॉर्म में होता है वाटर वेपर कि व्हेन वी बॉयल द वाटर इट फॉर्म्स वाटर वेपर्स. या जब वाटर इवेपोरेट होता है व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स हाई तो उस फॉर्म को उस दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. इन लिक्विड स्टेट it is vital for the existence of life on this planet, and in gaseous state it is important for respiration in organism and cycling of water. So water covers about 70% of the earth surface. हमारा जो अर्थ का surface है वो 70% वाटर से कवर्ड है. अगर हम किसी और प्लेनेट के ऊपर जाके हमारे अर्थ को देखें तो इट बिकम्स ब्लू. वाई? बिकॉज 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. सो बट मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर इज इन अनयूजेबल फॉर्म. हम सारे के सारे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते. 77. Why? Because 97.4% of water is in the ocean, which is highly salty for usage. We can't use water, ocean water or sea water because it is highly salty. And about 2% is in frozen. Frozen means freezed form में है, solid form में है. That is in glaciers as well as in the polar ice caps. And that again we can't use for human. Okay? Only 0.6% water is the actual available water in liquid form, out of which 0.59 is the groundwater
and only 0.01% water is fresh water that we can use. So it is the little fraction of water that is rapidly recycled in nature by the process called water cycle and used by all living systems on the earth. सिर्फ 0.0% वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है और फ्रेश वाटर की फॉर्म में है जो हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से अगेन हमारी अर्थ पे आता है, किस प्रोसेस के? बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल दैट इज used by all living systems on the earth. Now what is water cycle? Water cycle is also known as hydrological cycle. क्या बोलते हैं वाटर साइकिल को? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, which is continuous natural cycle of evaporation of water from the oceans, rivers, seas and subsequent condensation and precipitation. So there are three main processes in water cycle. First, the water gets evaporated from seas and oceans, clear? Then ऊपर जाके water क्या हो जाता है? The water vapors, when the temperature becomes low, the water vapors get condensed. This process is called condensation, and again water comes to the earth in the form of rain, snow or anything that is called precipitation. So three main processes are involved in water cycle, that is evaporation, condensation and precipitation. In water cycle it involves mainly two parts हैं. One is global water cycle and one is biological water cycle. Now what is global water cycle? The water cycle which does not involve life, जिसमें living things नहीं involve होते. मतलब अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, सी, ओशन, सन है, सब कुछ है, बट उसमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वाटर साइकिल. और बायोलॉजिकल वाटर साइकिल विच इन्वॉल्व्स लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, like human beings, like animals, that is known as biological water cycle. So here you can see the picture of water cycle. What we have to see here कि the water gets evaporated और ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? इसके clouds बन जाते हैं, that is called condensation. और again precipitation से पानी रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है वाटर, ठीक है, और नीचे आके सरफेस कुछ वाटर अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर सिम जाता है, सीप हो जाता है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर. और कुछ सरफेस से बह के रिवर्स में, रिवर्स के बाद स्ट्रीम्स में जाता है, स्ट्रीम्स के बाद सीज और ओशंस में, और वहाँ पे इकट्ठा होता है एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर. And on the other side you can see here the water gets evaporated from the leaves of plants, which is known as transpiration, and here we can call it biological water cycle. So here you can see, you have to draw the picture of water cycle on your notebooks. Next, here is the explanation of water cycle. I have already explained. The water evaporates from water bodies like seas and oceans, lakes, rivers and form clouds. When the temperature drops, the collected water vapor condenses and precipitate in the form of rain, snow or which falls on the soil. The rain water then percolates. Percolates means soil के अंदर सिम जाते हैं. जब भी जैसे गार्डन में जहाँ पे मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें सिम जाता है, परकोलेट्स हो जाता है एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ वाटर टेबल, जो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है. सरफेस वाटर एंड वाटर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो फ्लोज इनटू रिवर्स, streams and finally joins the sea. This completes the water cycle. Now precipitation is balanced by evaporation. So we can say that global water is to be in steady state. मतलब इसकी जो ना जितनी precipitation होती है उतनी ही क्या होती है? evaporation. तो water की जो percentage है वो क्या रहती है? That is in the steady form. Steady means मतलब उसकी amount जो रहती है वो मतलब equal ही रहती है. Now the biological water cycle involves the entry of water into living things and then return to atmosphere like in plants through transpiration. Now what are the sources of water? There are two main sources of water. One is surface water and the groundwater. So what is surface water? Surface water is water found over the earth. जो पानी के जो अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, लाइक इन रिवर्स है, सीज है, ओशंस है,
वो सारे क्या, दैट इज द पार्ट ऑफ surface water and it is the purest form of water, and the surface water is lost through evaporation, return as rain and then seeps into the ground. जो पानी surface water का पानी evaporate हो जाता है, again जब वापस आता है rain की form में, तो कुछ water इसमें से क्या होता है, it seeps into the soil and becomes a part of groundwater. Now what is groundwater? The water which is stored under the soil is known as groundwater or underground water. So this is the water that percolates into the soil and this water is collected between the layers of hard bedrocks. जैसे जैसे पानी नीचे जाता है एक ऐसी लेयर आती है, पूरी रॉक्स की लेयर आ जाती है नीचे सॉइल के, उसके ऊपर पानी इकट्ठा होता रहता है एंड दैट collected water over the bedrock is it forms the aquifer. क्या बनाता है वो, एक्यूफर. जितना पानी इकट्ठा हो जाता है पूरा इसके नीचे सॉइल के नीचे, दैट इज नोन एज, एंड ओवर द बेड रॉक्स दैट इज फॉर्म्स द एक्यूफर. और जो पानी का लेवल होता है, द अपर लेवल ऑफ दिस वाटर जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल, और the upper level of this water zone is called water table, and the process of seeping water by downward movement, नीचे नीचे पानी का जाना, that is known as infiltration, and this water recharges the groundwater. So it is from the aquifer, हम नीचे से पानी निकालते हैं, लाइक ट्यूबवेल्स है, हैंड पंप्स के थ्रू, मोटरों के थ्रू जो पानी खींचते हैं, वो कौन सा वाटर होता है, दैट इज द वाटर विच वी कलेक्टेड फ्रॉम द aquifer. So now what is soil water? We know that अगर आप when we dug the soil, तो आप देखो soil अंदर से गीली होती है, because soil के particles में जो उसके स्पेसिस होती हैं, इट कंटेन्स वाटर. कुछ पानी तो नीचे चला जाता है रिटेन, बट सम वाटर इज रिटेन्ड इन द सॉइल एंड दैट वाटर इज नोन एज सॉइल वाटर विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, बाय द ट्रीज एंड अदर organisms. So that water is called soil water. I hope that you will understand these topics. Thank you very much.